बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कश्मीर लिंक प्रोग्राम से मैं सैयद अरशद कैलगरी कनाडा से आप सबको सलाम कहता हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अली राका और सनम बुखारी। बोथ ऑफ देम दे आर वर्किंग इन कोलंबिया कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम अली एंड अस्सलाम वालेकुम सनम। Salam alaikum Sayyid, salam alaikum everyone. Thank you. Ali, before we start our program, I'll take you for 1 minute to my paradise on the earth, Kashmir. You don't mind? Yeah, but if you could fly me there, not to drive the road, I would be happy. I'll just show you my Kashmir and then we will come back and then we'll see all. Please, please. Thank you very much. Welcome back. So, as I was saying, both of them, Ali and Sanam, they are working with the Columbia College, Calgary, Canada. They are employee of Columbia College, but very wonderful people and always there to help whoever needs any help. So, starting right away with Ali, could you explain what is Columbia College and what is your role as a lead student advisor? Thank you, Arshad, for the invitation. And seeing Kashmir is very beautiful. I hope one day to visit that place. You promised me that you will take me to Lebanon and I will take you to Kashmir. That's a deal? That's a promise. Okay, good. Yeah. Once again, thank you for the invitation. Today we are here to present Columbia College programs. My colleague and I, Sanam Bukhari. And we would like to present Columbia's programs for grant funding programs and loan professional programs. So for the grant funding programs, we have the English as a second language, employment training, and academic upgrading. Also, Columbia College just added a new funded program, which it can be very beneficial to many in the community, and we call it ESL Healthcare Aid, ESL Pathway to Healthcare Aid. So, but they have to be at level 700 or Canadian Language Benchmark 7 and up to be accepted into this program. Also, we are pleased to announce that this program will be fully funded. They will come 4 months to ESL and then transition to the healthcare aid program. And of course, at the end, they will achieve and receive the certification of healthcare aid.
Of course, along the presentation, Sanam and I will be taking many questions. Please ask all questions. Um, just one thing I would like to emphasize on: um, don't please bring if I can qualify for the funding or not, because there are some confidential questions we are unable to discuss on social media. At the end, we will leave our numbers, and then you could call us starting tomorrow or next week, and we are happy to discuss it and review each case individually. Okay. Second, we have the one more. Second, we have the professional programs, Mhm. and professional programs. Also, we have the regular healthcare aide, licensed practical nurse, dental assistant, human services professional, and educational assistant. Okay, very good. That's a basic information. uh, uh, अली ने जो एक्सप्लेन किया है नटशल में वो ये कि uh, Sanam was cut off anyway. So बेसिकली ये कि कोलंबिया कॉलेज ये कैलगरी का बड़ा रिप्यूटेबल कॉलेज है, जिसमें जिस तरह के अली ने एक्सप्लेन किया, और हम डाउन द रोड सनम से भी पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगी उर्दू में कि मुख्तलिफ प्रोफेशंस के कोर्सेज वो कराते हैं, जिसमें बाज़ प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग है, और उसकी भी हम तफसील जानेंगे अली से भी और सनम से भी। इन द मीन टाइम आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है अगर कि हाउ दे कैन गेट एक्सेप्टेड इन कोलंबिया कॉलेज, तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर हम एड्रेस करेंगे वो क्वेश्चन अली से या सनम से। थैंक यू सनम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो सनम, आवाज आ रही है आपको? Think she has an issue with the internet. Ali, Yes. as you said that you guys have different programs in Columbia College. So, as a lead admission advisor, what is your role in this position I at think so, Columbia? yeah. As a lead admission advisor in the department, Mhm. I have to make sure um, intake enrollment for each semester um, are met. In addition, I have to make sure all the grant funds applications uh, being submitted on time. So if people come in for the funding, their money will not be delayed. Um, also sometimes I'm the backup of the manager, so I'm not gonna call myself as an acting manager, but when the manager is not there, I will be the backup of the manager at the moment. Okay. Uh, सनम, आपको आवाज आ रही है? Okay, so can you describe what are the most like programs that can be good for the immigrants, especially you know that you are as an immigrant that what is our background, maybe it's more or less different, but mostly uh, we want to have a shortcut and get some training and then find a job. So what are the programs that can helpful for the immigrants? Um,
each case is different and unique, Sayyid Arshid. Yes. Now, many they come with credentials already to Canada, emigrated with credentials, Mm-hmm. but many they find obstacles and barriers to find a job in their own profession, and sometimes they need a short term employment or certification for them to be employed while they are evaluating their credentials. As a career advisor as well at the college, um, for each individual, we have to sit down and take a look at their background, what they have done, experience, years of experience at that profession. What else can they do related to the job that they have done back home? Mm-hmm. Additionally, if they need English, if they need to evaluate their credentials, we need to help them step by step to Mm-hmm. enable them to reach their goals. But each case is unique. Now, there's a lot of short certification Mm-hmm. programs people can attend and take Mm-hmm. in many colleges, including Columbia College. For Okay. example, that you and I we attended the Human Services Professional Program, which Yes. is the 1 year diploma, Mm-hmm. and many immigrants actually love this program at Columbia College because of their second and third languages, and that's Mm-hmm. an asset for them to find employment with immigrant agencies. Additionally, besides the grant funds, we have the education assistant, which is the teacher assistant 6 month program, and that allowed them to work as a teacher assistant. Okay. Sanam, can you hear us? Sanam, can you hear us? Maybe I would I like you can, to yeah. give can you give some introduction in Urdu, please? सर आप आवाज आ रही है Hello, आपको सनम? Ali, can you hear me? I can hear you, yes. Yeah. Okay. Assalamu alaikum सबको और मेरा नाम सनम बुखारी. I'm working as an admission advisor at Columbia College. So जो basic इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स के बारे में, ये फंडेड प्रोग्राम्स के बारे में कि हम इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज, और जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एंट्री लेवल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो फंडेड हैं, जो न्यूली एक के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनका लैंग्वेज लेवल बहुत, और वो किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन नॉट गेट इनटू एंट्री लेवल एम्प्लॉयमेंट. सो उनके लिए सबसे पहले उनकी लैंग्वेज पे भी शॉर्ट टर्म भी है, लाइक 8 months एंड देन 1 year प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो सबसे पहले अपनी इंग्लिश अपग्रेड करते हैं, देन दे गेट वर्क एक्सपीरियंस एज वेल. और प्रैक्टिकल लाइक आपको किसी जगह पर भेजा जाता है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेंगे, देन फिर आप जो है जाकर उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट या किसी भी शोबे में जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आप जाकर अप्लाई करते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं कि अगर इंग्लिश का लेवल बहुत लो है तो सबसे पहले हम आपको इंग्लिश में डालें ताकि आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करके फिर जॉब के लिए जाएं, ताकि आप अपनी जॉब को मेंटेन कर सकें, लैंग्वेज आप उसको लूज ना कर दें. तो ये सब प्रोग्राम्स फंडेड हैं और आपके इट डिपेंड्स कि आपकी आपकी इनकम क्या है, फैमिली इनकम, और उसके अलावा आपका जो है वो सबका बैकग्राउंड एजुकेशन और सब कुछ देखा जाता है, रिलेटिव फैमिली साइज एंड एवरीथिंग, और बेस्ड ऑन दैट आप एलिजिबल हो जाते हैं. समटाइम्स उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट आपकी ट्यूशन भी पिकती है एंड देन आपको लिविंग अलाउंस भी मिलता है. लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम ज्यादा है, आपको लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा, इट डजंट हर्ट टू अप्लाई. आई वुड से कि आप फिर भी ट्राई करें. आपको लिविंग अलाउंस नहीं मिलता बट आप एलिजिबल होते हैं कि गवर्नमेंट आपकी ट्यूशन पे कर दे एंड बुक्स आपकी पे कर देती है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू अप्लाई फॉर फंडेड प्रोग्राम्स, और स्पेशली जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली के लिए, या जो बहुत टाइम से कनाडा में लेकिन जिन्होंने इंग्लिश अभी तक कोई क्लासेस नहीं ली, तो वो ले सकते हैं. इसके अलावा ये तो सब फंडेड प्रोग्राम्स हैं, और इसके बारे में अगर आप कॉल करें एडवाइजर्स आपको हेल्प करते हैं. और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन,
उसने Ali, दिया can आपको you, लोन Ali, आपकी फैमिली साइज can और you इनकम के send हिसाब me से आपको दिया जाता है. So we check Sanam's everything here. telephone We number so find I can call her, and then Yeah, maybe yes, it's yes, better to have her audio link because she's cracking yes, now. yes, yes. I can. Yes, give me 1 second. I send it to you by message, Said Arshid. Okay, thank you. On my messenger? Yes. No, messages, please. Yes, messages. Okay, so you can go ahead, Ali. What do you Yes. want to add? I believe I did catch what Sanam is trying to say in Urdu in regards of the eligibility for the grant funding programs. That means you understand Urdu too, eh? Hey, tike. Um, yeah, Sanam is teaching me a few words, but I cannot say them on air right now. Okay. Uh, okay. Okay. So basically, the grant funds programs, meaning even if the spouse is working, it's still worth to apply because we do our own liquid asset for the eligibility. Okay. And it doesn't mean if the spouse is working, that means the full amount will be calculated towards the funding. So that's why at the beginning I told you, if you have specific questions for the funding programs, try to keep it direct to our phone numbers when we leave it at the end, because Okay. one-on-one we are able to share confidential information rather than on the social media. ओके सनम, आपको आवाज आ रही है या मैं आपको ऑडियो लिंक पे कॉल करूं? I think I'll call you on the number, so maybe. आवाज तो मुझे आ रही है, आप लोगों को तो मैं सकती हूँ. नहीं, वो क्रैक हो आपको रही मैं है दूसरा तो नंबर मैं देती हूँ, आप उस पर कॉल कर लें, और व्हाटएवर. 7753740 is good. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा, आई थिंक चलें अपना मैं दोनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन का फायदा उठाते हैं जो क्लियर हो. हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है. हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओके. आप सुन रही है मुझे? जी जी अच्छा, तो जिस तरह अली ने एक्सप्लेन किया कि जो फंडिंग है, फंडिंग के लिए जो किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या जो मुख्तलिफ बंदे की मुख्तलिफ सिचुएशन है, जो उनकी इनकम लेवल और एंड द फैमिली साइज एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सो अगर किसी को फंडिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो इट इज़ पॉसिबल, राइट? ये फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है. यही बात है सनम? फंडिंग आपको आपकी
फैमिली साइज, फैमिली इनकम के हिसाब से ही मिलती है, बट उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें कि हमारी इनकम हाई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. बाद में ऐसे होता है कि आप बुक्स दोनों मिल जाती हैं, दोनों पे गवर्नमेंट पे कर देती है. अगर आप लिविंग अलाउंस के लिए नहीं भी एलिजिबल तो इट डजंट मैटर. अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम हाई भी है तो आप फिर भी चेक कर सकते हैं कि यू क्वालिफाई फॉर ट्यूशन इन बुक्स. Okay. And same applies to ESL? ये फंडेड प्रोग्राम के लिए है. ESL और ट्रेनिंग प्रोग्राम, फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी हम सब के लिए ये रूल अप्लाई होते हैं. अच्छा, ओके. अब जरा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगी कि जो आपके जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं आपकी कोलंबिया कॉलेज में? सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हमारे पास चाइल्ड केयर असिस्टेंट का प्रोग्राम है और नया प्रोग्राम जो एक इंट्रोड्यूस कराया जिसका भी अली ने भी बताया है, हेल्थ केयर एड का प्रोग्राम है. वो बहुत टाइम के बाद फंडेड प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है और इससे कुछ आप सीनियर्स के साथ या जो होम टू होम केयर जो होती है उसमें आप जाकर काम कर सकते हैं, सीनियर होम वगैरह में या फ्रंट लाइन जो होती है. सो हेल्थ केयर एड कह रही हैं आप? हेल्थ केयर एड. अच्छा, ये 6 महीने का प्रोग्राम है? नहीं, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश की क्लासेस देनी पड़ती हैं क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश पर फोकस करना है. उसमें एक सर्टेन बेंच मार्क होता है, बट सबसे पहले आपको फ्यू इंग्लिश के कुछ सेमेस्टर्स लेने, 1 या 2. जब आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप हेल्थ केयर एड का मेन जो उसका करिकुलम है वो फिर आप पढ़ते हैं. बट इट्स वेरी गुड प्रोग्राम. अभी स्टार्ट हो रहा है. मार्च में हमारी फर्स्ट इनटेक जा रही है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये फंडेड प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया. अच्छा, इसके मार्च में एनरोलमेंट हो रही है, राइट? मार्च में एनरोलमेंट, मतलब एनरोलमेंट तो हम अभी से कर रहे हैं लेकिन मार्च में प्रोग्राम स्टार्ट होगा. ओके. ये जो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं तो ऑफ कोर्स जो सारे प्रोग्राम हैं उनकी डिफरेंट डेडलाइंस हैं, राइट? उनकी डेडलाइंस होती हैं. आई वुड से कि हर सेमेस्टर जो है जैसे ESL जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मई में है, बट मई का इंतजार नहीं करना होता क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस होने में टाइम लगता है. इसलिए उसको अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर यू शुड अप्लाई. ओके. ताकि फंडिंग एलिजिबिलिटी और वो ऑल दैट रिक्वायरमेंट्स है वो सब मीट करें और फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें. अच्छा, ये सनम ये जो कोविड की वजह से कोई जो क्राइटेरिया है या कोई चीज रिलैक्स की है कोलंबिया कॉलेज ने या इज इट द सेम एज इट वाज बिफोर? कोविड की वजह से आई मीन ऑनलाइन क्लासेस है. ऑनलाइन है, ओके. ऑनलाइन सब क्लासेस ऑनलाइन है फिलहाल. तो जब तक गवर्नमेंट की कोई नई वो नहीं आ जाती तब तक तो आई थिंक सितंबर तक, अक्टूबर तक फिलहाल तो वो चांस कि हम क्लासेस में जाएं. बट आई थिंक अभी तक तो ऑनलाइन ही है और जब होगा तो फिर हम, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एंड ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, बट आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो रिलायबल इंटरनेट जैसे मेरा वैसा ना हो और इंटरनेट और इसके अलावा कंप्यूटर एक डिवाइस जो है वो भी हो ताकि क्लासेस एटलीस्ट आप अटेंड कर सकें. ओके, ठीक. मैं अली से एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा अगर किसी का क्वेश्चन हुआ या कोई कमेंट्स या जो कंसर्न है किसी के. अली, you are in Columbia College for a long time now. How you compare Columbia College with the other colleges? Like there are few other colleges in Calgary. So how you compare Columbia College with those other colleges? I compare Columbia College differently than other colleges. It's like a school in the Northeast and a school in the Southwest. Meaning the curriculum that Columbia College provides is exactly the same curriculum like Bow Valley College. Mm-hmm. But the benefit of the Columbia College additionally
we have a small class sizes, Okay. and we have a lot of one-on-one support. Mm-hmm. And just recently, the dental assistant program, it is an accelerated program, meaning across Canada, they write the same exams. Okay. Columbia College was able to score 15% above all colleges that they offer the same program. Okay. We have a very professional admission advisors. You have me, One of and them is you you, have and one me. is Sanam. You have Sanam, Mhm. and we go above and beyond to make sure uh, we do help each individual coming to Columbia College. Even though if we are not able to help them at the college, we still refer them somewhere else to get help. But we go above and beyond. Okay. Good. Sanam, कोलंबिया कॉलेज में आपके ये जो प्रोग्राम्स हैं, वेदर दे आर सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम, आपके जो टीचर्स हैं वो कोलंबिया कॉलेज के एम्प्लॉई हैं या वो यूनिवर्सिटीज से हैं, जैसे कैलगरी यूनिवर्सिटी या बाहर से हैं? कोलंबिया कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो समझते हैं तो क्या पूछना, मतलब वो आपके कोलंबिया कॉलेज के एम्प्लॉइज हैं या जो कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना वो बाहर यूनिवर्सिटी से आके पढ़ाते हैं या किसी और? तो वहाँ से भी होते हैं जो हमें जिस तरह से चाहिए होता है। जैसे हमारे जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, वो आकर पढ़ाते हैं। और लेकिन हमारी परमानेंट फैकल्टी भी है, जैसे ESL एंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो हमारी अपनी फैकल्टी है। ओके, कोलंबिया कॉलेज के अपने एम्प्लॉय। ओके। जब ये सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है प्रोग्राम, ये जब एक स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो उसके बाद भी कोलंबिया कॉलेज वालों की कोई हेल्प है उसकी जॉब फाइंडिंग में? जो प्री करियर प्रोग्राम्स है उसमें ये होता है कि जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए उसमें हम ये करते हैं कि उनको प्रैक्टिकम के लिए भेज दिया, जैसे वॉलंटियर वर्क हो गया, वो हम उनको ऑफ कोर्स उसके लिए हेल्प करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं क्योंकि ये एक तरह की जॉब सर्च होती है उनके लिए कि आप जॉब सर्च करें एंड फाइंड अ प्लेस, राइट। अगर उनके पास ऑलरेडी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज भी उनको हेल्प करता है इसमें। और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसमें ये होता है कि इसमें भी प्रैक्टिकम होता है, तो दे फाइंड द प्लेस। और फिर मोस्टली यही होता है कि अगर किसी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ओपनिंग आती है तो दे गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मगर मेनली ये होता है कि ऑब्वियसली जो प्री करियर जो बिकॉज जो जिनका लैंग्वेज लेवल लो होता है ऑब्वियसली वो मुश्किल होती है, तो हम उनको हेल्प करते हैं कि लगते जो भी एंट्री लेवल एम्प्लॉयमेंट होगी, वेयर हाउस है, कैशियर है, सेल्स एंड सर्विसेज है, चाइल्ड केयर है, या जो भी है, तो हम उससे भी उनको हेल्प कर देते हैं। सही। Ali, at Columbia College, they accept international students, right? Yes, we do. Okay. But recently, we are unable to provide a postgraduate permit, meaning most of the institutes, once you complete your program, they'll give you a postgraduate permit, so to allow you to work in Canada within limited years. But we are working on it to bring it back. But yes, we do accept international students to come to Columbia College, and we go like other institute. They have to be accepted into the program. If they are able to submit their prerequisites, like meaning the qualification to enter the program, we will review it. If not, even far, they still have to write the entry assessment, and we will have to designate a proctor to whomever writing the assessment, to make sure that proctor qualified to witness the person who is writing the assessment. So yes, we do accept international students.
Okay, so only thing is कि उनको इस वक्त जो right now वो यहाँ काम नहीं कर सकते, right सनम? जी, वो एक्चुअली उसमें ये है कि डजंट मीन कि वो वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, दे कैन, मगर चूंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, राइट, तो उसमें वर्क परमिट लेने में यानी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको वर्क परमिट मिलेगा ही। आई मीन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मिला भी है वर्क परमिट, ऐसे नहीं है कि उनको नहीं मिला, मगर ऐसे ही होता है कि बाद सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि प्राइवेट कॉलेज है। तो वो एक चीज अगर सिर्फ स्टडीज का है, देन स्टडीज करनी है तो दे आर वेलकम टू अप्लाई, मगर अगर वर्क परमिट या इस तरह का मैं ये तो नहीं है कि नहीं मिलता, बट चांसेस आर 50-50। ओके, सो जस्ट जो इसकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वेयर दे शुड स्टार्ट, इसका जो प्रोसीजर है, जो स्टेप बाय स्टेप उनको क्या करना है, पहला जो है ना काम क्या है कि वो अगर वो इंटेंड करते हैं कि हम कोलंबिया कॉलेज में से किसी प्रोफेशन में हम दाखिला लेना चाहते हैं, तो वेयर शुड दे स्टार्ट? वेबसाइट पे जाकर columbia.ab.ca, उस पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का लिंक है, उस पर लिंक पे जाकर उन्होंने अपनी इंक्वायरी सबमिट करनी होती है। columbiacollege.ca, ओके, ab.ca, ओके, और फिर उस पर जाकर का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके फिर अपनी इंक्वायरी वहां से वो सबमिट करते हैं, राइट, और फिर जो भी प्रॉक्टर होगा या जो भी प्रॉस्पेक्ट एडवाइजर होगा वो उनसे कांटेक्ट करता है और उनको नेक्स्ट स्टेप बताता है कि हाउ टू प्रोसीड विद दैट। ओके, हम इन सब करते हैं उसके बाद। ओके, सो इसका कोई से अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान में है या लेबनान में है या कहीं इंडिया में है, तो वो अगर आज अपनी इंटरेस्ट शो करता है और वो क्वालिफाई करता है, वो सिरा, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना अरसा लगता है इसको? वो फिर हर जो कंट्री है उसकी अपनी एम्बेसी पे वो डिपेंड करता है, बट इट्स नॉट समथिंग स्टडी परमिट का कोई इतना वो नहीं होता है। एक दफा आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं एंड देन आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू होता है। आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस लेटर फिर वो आगे स्टूडेंट्स तक है कि वो कितना जल्दी एम्बेसी में वो, क्योंकि उनको वो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम कोलंबिया कॉलेज है? फ्रॉम द कॉलेज, किस भी कॉलेज, जैसे कोलंबिया कॉलेज से उन्होंने किया तो हम उनको लेटर इशू करेंगे आफ्टर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और फिर उस लेटर के साथ फिर वो स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं ताकि शो कर सकें कि उनका एडमिशन हो चुका है। ओके, आप मुझे रिपीट करेंगी कि ये columbiacollege.ab.ca, राइट? नहीं, कॉलेज नहीं है, columbia.ab.ca। ओके, columbiaab.ca, आप वहां जाएंगे तो इसमें आप जिस प्रोग्राम में इंटेंड है आपकी कि मैं इसमें करना चाहता हूँ, वहाँ आप वो करेंगे, और उसके बाद जो है ना कोलंबिया वाले आपसे राब्ता करेंगे कि हु यू आर, और जो है ना आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनका पाकिस्तान में या इंडिया या जहाँ भी, बांग्लादेश, वहाँ पे वो एक टेस्ट लेने वाला बंदा होगा, राइट? वो टेस्ट लेगा, अगर वो टेस्ट आपकी पास हो गई तो वो आप कोलंबिया वालों को वापस इन्फॉर्म करेगा कि इस बंदे ने टेस्ट पास कर ली है, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, वी एक्सेप्ट हिम एज ए स्टूडेंट, राइट? और फिर जो है वो बेस उस पे वो करेगा अप्लाई स्टूडेंट वीजा के लिए, whichever country he lives in, right? स्टडी परमिट की एप्लीकेशन के साथ लेटर अटैच करके, और आई थिंक जब आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो आपको फाइनेंशियल और वो सारा कुछ जी हाँ, कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, राइट, वो सारा कुछ करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप सबमिट कर दें। ओके, ओके, Ali, so about this, there were few dental assistant and human services professional diploma program. Is there any program that is starting soon in coming weeks or months? The English as a second language, academic upgrading. We did talk about the ESL pathway to healthcare aid, which it will start March 1st. And for those are interested into this profession,
to contact the college as soon as possible. Okay. But please, you have to have a CLB 7 so we could start the process. And of course, you have to meet the qualifications and the requirements to be eligible for the funding. That's one. Two, the intake for ESL, English as a Second Language, will be on May 3rd. Academic upgrading. Now, academic upgrading funding, it doesn't have to be specific for immigrants. It Mhm. could be for all because we do have also part-time bursary funding. Example, if a graduate from Canada being out of the system for 1 year, like outside from K to 12 for 1 year, and Mhm. he or she will need to upgrade their mathematics, science, biology, chemistry. We do have a part-time funds, bursary funds, but they will not be eligible for allowances, Mhm. but it can be funded as well for those are looking for academic upgrading. And we Okay. have the employment training, the childcare assistant also will start May 3rd. As for the professional programs, the practical nurse, human services, education assistant will start May 24. And we have the dental assistant, the practical nurse as well, May 24. And we have the dental assistant, which will start April 12. Okay. Uh, this dental assistant and practical nurse, they are 1 year program, The practical nurse is 2 years two program, years. Okay. and the dental assistant 7 month program. Okay. Yeah, Okay. and they are both accelerated programs, meaning across Canada they study the same curriculum, and Okay. when they are done, when we say we have 100% graduates and employment, not only we show the statistics from Columbia College, but also we show the international exam. And that's why when I at the beginning I said dental assistant, Columbia College, all 36, 33, or 36 students all passed and they scored above cross Canada 15%. This is coming from the international committee. It's not coming Great. from Columbia College. Okay. Yeah. And when I say accelerated, Saeed Rashid, when I say accelerated for both two programs, if they graduate in Alberta, if they would like to move to British Columbia, Ontario, they are allowed to work because they have the national exam. ओके सो सनम ये जो अली कह रहे हैं कि वो जब कोलंबिया कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो वो ब्रिटिश कोलंबिया या अदर प्रोविंसेस में भी एलिजिबल हैं कि वो काम कर सकते हैं तो ये सारे प्रोग्राम्स पे अप्लाई होता है या कुछ प्रोग्राम हैं जो कि से ओंटारियो में वो एक्सेप्ट नहीं करते या कोई क्यूबेक में या किसी और प्रोविंस में नहीं वो सब सब प्रोग्राम दो सिर्फ लाइसेंस प्रोग्राम है दैट असिस्टेंट एंड प्रैक्टिकल नर्स ओके तो उसके लिए जो आपको जो लाइसेंस लेने के लिए जो एग्जाम होता है वो जो आप लिखते हैं वो अगर आप पास करते हैं तो आप एनीवेयर यू कैन वर्क एनीवेयर और बाकी कोर्सेज तो वैसे भी जनरल है आप पढ़ के जहाँ पे भी आप किसी भी प्रोविंस में चले जाएं यू कैन अप्लाई Okay, so Ali, this human services professional program is accepted in all provinces, right? Well, no, it's not accredited, but it doesn't mean if you move to British Columbia and you find a job as a social work assistant, you can't work with your credentials from Alberta. Okay, same thing when you are coming from Pakistan or Lebanon or India, and you present your diploma, degrees, or masters. When you finish your evaluation, it's treated the same thing. Okay. Okay, yeah. Okay. सनम ये जो आपके से एक बंदे ने किसी एक प्रोग्राम में फंडिंग ली हुई है प्रैक्टिकल नर्स है या ह्यूमन सर्विसेज प्रोफेशनल है और वो स्टूडेंट किसी और प्रोग्राम
کوئی اور پروگرام کرنا چاہتا ہے, he could not find a job in that particular program, تو کیا اس کے لیے بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ فنڈنگ اس کو مل سکتی ہے دوسرے کسی پروگرام میں, یا ہاؤ اٹ ورکس؟ تو پروفیشنل پروگرام میں جیسے ہیومن سروس, ایجوکیشن اسسٹنٹ ہے, ڈینٹل اسسٹنٹ, پریکٹیکل نرس, یہ فنڈیڈ مینس آپ اسٹوڈنٹ لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اوکے, پروگرام کمپلیٹلی فنڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک, مینس کہ آپ لون اپلائی کرتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹ لون آپ کو آپ کی ایلیجیبلٹی چیک کرتا ہے کہ آپ کو گرانٹ بھی ملنی چاہیے یا نہیں, بیکاز کمبینیشن آف لون اینڈ گرانٹ. تو جب آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے بعد آپ جو بھی کوئی اور نیا کورس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے, سو دوبارہ سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے کوالیفائی بھی کرنا پڑے گا. کوالیفائی یوزلی کر لیتے ہیں. اچھا, اگر فرسٹ ٹائم ان کو مل جائے تو سیکنڈ ٹائم بیکاز فیو منتھس ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اگر آپ فردر اسٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یو کین اپلائی. اوکے. Ali, anything you want to add? I believe we covered everything, but I still believe after we leave this beautiful discussion or presentation, we might say, "Oh, we forgot this or we forgot that." But please do not hesitate. I'm gonna put Columbia College numbers on the screenshot here. Please do not hesitate to give us a call to ask for Ali or Sanam. Okay, to ask Ali or Sanam, and we are happy to answer all the questions that you have for us. Okay, can you read this question? I can. Assalamu Okay. alaikum. Can you please tell me about master's program for civil engineering students? That will be University of Calgary. Yeah, so it's not the Columbia College. No, it will be University of Calgary. Okay. All right. So anything you want to add, Sanam? اپنے جو ہمارے جو دیسی ویورز ہیں اردو سننے والے, ان کے لیے تھوڑا ایکسپلین کر لیں کہ کیا کیا پروگرام ہیں اور جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ بھی تھوڑے, اگر جو آپ کو یاد ہیں کہ کیا کیا ڈیڈ لائنز ہیں کس کس پروگرام کی. ابھی میں دوبارہ ای ایس ایل سب سے پہلے میں فنڈیڈ پروگرامس کے بارے میں بتا رہی ہوں. ہم ابھی ای ایس ایل کے لیے اور ٹریننگ پروگرام جو فلی فنڈیڈ بائی گورنمنٹ, اس کے لیے وہ مئی میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں, May 3rd. اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم وہ انٹیک ابھی لے رہے ہیں. تو جو کوئی بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے دے کین اپلائی فار فنڈیڈ ٹریننگ پروگرام. اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکم یو نیور نو کہ آپ کی انکم کتنی ہے, آپ اپنی انکم کے حساب سے کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں, تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو ٹیوشن, بکس اینڈ لیونگ الاؤنس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جن کی انکم اگر ہائی بھی ہوتی ہے بٹ اگر وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, اپنی انگلش امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی انٹری لیول امپلائمنٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کی ٹیوشن اینڈ بکس کورڈ ہوگی. تو وہ مئی میں تین ٹیک ہم اس کے لیے لے رہے ہیں, جیسے چائلڈ کیئر اسسٹنٹ پروگرام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہیلتھ کیئر ایڈ جو ابھی بتایا وہ تو مارچ سے شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ای ایس ایل اور فنڈیڈ پروگرام مئی میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے, یو کین آلویز آسک. I mean, doesn't cost you anything, so you can just call and check your eligibility if you're eligible to get funding. اور اگر جو پروفیشنل پروگرام اس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے, اس میں کچھ جو فلی فنڈیڈ نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ لون ہوتا ہے, بٹ اس کے لیے بھی ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ آپ جسٹ اس کی انکوائری صرف سبمٹ کریں تو آپ کو باقی ایڈوائزرز جو ہیں وہ آپ کو گائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے آگے کیسے انرول کرنا ہے پروگرام کے لیے. پر آئی وڈ سے کہ اگر جو کوئی مینلی جو فنڈنگ کے لیے جس کو کوئی ہے ایشو یا کسی کو یہ ہے کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں, جسٹ کال اینڈ چیک. اوکے, گڈ. سو آپ کولمبیا کالج کا نمبر شیئر کریں گے علی؟ کین یو شیئر دا؟ جی, میں نمبر بھی شیئر کر لیتے ہیں, اور ساتھ in case اگر they need translation or anything, any language, so علی کی ایکسٹینشن بھی اور میں اپنی ایکسٹینشن بھی شیئر کر دوں گی کامنٹ باکس میں. اوکے, گڈ. یا سو کامنٹ باکس میں جب آپ اس لنک پہ جائیں گے, اس پروگرام کو دیکھیں گے,
تو کمنٹ باکس میں آپ کا ٹیلی فون نمبر سنم کا بھی ہوگا اور علی کا بھی, اور ویب سائٹ columbia.ab.ca, right? Okay, so last I might message, Eli. add one thing, Syed Arshid. Yes. Besides, we talked about the grant funds program and the loan programs. I don't know if your audience aware, with the loan programs, there are also grant implemented with the loan. And it's all based on the applicant, the family size, the last year's threshold, the income. We witnessed people that receives grant with the loan and big amount of grant. Okay, so when I say grant, meaning they don't have to pay that money. There's still loan you have to pay, but additionally you will receive some grant with the loan. You don't have to pay back, and the loan as well is very flexible. If I graduate, example, from dental assistant, I don't find work upon graduation. The Canada loan interest will start right away, but the provincial interest will start after 6 months. Okay. And after 6 months, if I'm unable to pay, I'm always able to postpone my payments, and there's no penalty to do that. So if people would like to change their lives as well and invest in the education, there's a grant within the loan that they could take advantage out of it. اوکے سنا, سنم آپ یہ سنا کا کوشچن ہے, آپ جنرل میں نے کوشچن دیکھا ہے, وہ آئلس تو ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ تو جنرل وہ دیکھ سکتے تھے, لیکن جنرل نہیں ہوتا. جنرل میں یہ ہے کہ کوئی لوکل, جیسے وہ پوچھ رہی ہیں سنا کہاں سے ہے, یہ آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے, اوکے. تو جنرل جو ہے وہ آبویسلی آپ کو اپنا بینچ مارک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ انٹرنیشنل اپلائی کرتے ہیں, یونیورسٹی کالج کہیں بھی, تو آئلس ہی مینلی ریکوائرڈ ہوتا ہے. مگر لیٹس سے ہمارے پروگرام کے لیے اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپلائی, تو ہمارے پاس اگر آئلس آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم خود بھی جیسے علی نے بتایا تھا کہ ہم کو سارا ارینج کرواتے ہیں کہ آپ کسی لائبریری میں جا کر وہاں پر ہمارا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ اسپیسیفک ہمارے کالج کے لیے ہے, رائٹ. تو ہم ایک انٹری ٹیسٹ بھی ان کے لیے کنڈکٹ کرا سکتے ہیں. اگر وہ پاس کر لیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں اپلائی دے, پھر ان کو ایکسیپٹنس لیٹر ایشو ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سنم, یہ پاکستان میں آپ کے ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ کہاں پہ ہے, اسلام آباد میں ہے؟ نہیں, ٹیسٹ سینٹر ایسے نہیں ہوتے. وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں کو بولنا ہے اسٹوڈینٹس کو کہ کسی جو ریلائبل, جیسے گورنمنٹ کوئی لائبریری ہو گئی, رائٹ. اوکے آئی انڈرسٹینڈ. لائبریری کا ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اس سے, جیسے کسی اسکول کالج وغیرہ میں اگر جا کر انہوں نے بیٹھ کر لکھنا ایگزام, تو ہم ڈائریکٹلی اس کالج کا وہ ہمیں ایڈریس دیں گے, اور جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کا ہمیں ای میل یا جو بھی, تو ہم ڈائریکٹلی ان کو بھیجیں گے, دے ول مانیٹر. اوکے, سو اٹس ناٹ اے اسپیسیفک سینٹر. یہ جو کوئی بھی کریڈیبل بندہ ہوگا وہ ریفر کریں گے, اور آپ لوگ اس سے کانٹیکٹ کریں گے کہ یہ ڈز ہی لک کریڈیبل, اور آپ اس کو کہیں گے کہ اس کا ٹیسٹ لیں, اور وہ ٹیسٹ لے کے آپ کو رزلٹ یا جو بھی ہوگا وہ بھیجے گا, رائٹ. ایگزیکٹلی, وہ سب ان کو بھیجیں گے, لائک جو انٹری ٹیسٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ سارا ان کو بھیجا جائے گا, اور پھر وہ آگے ٹیسٹ لیں گے جیسے ایگزام ہوتا ہے. اوکے, سو اٹس ویری سمپل, لائک کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کے پروفیسر کا آپ ریفر کر دیں, جیسے پاکستان یا لبنان یا جہاں بھی ہے, کہ جی یہ پروفیسر ہے, اور آپ لوگ پھر اس کو کانٹیکٹ کریں گے کولمبیا والے کے, اوکے جی اسٹوڈنٹ کا آپ ٹیسٹ لیں, اور جو بھی اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کو دے گا کہ اس کے ٹیسٹ میں یہ رزلٹ آیا ہے, یا وہ جو رزلٹ ہے وہ آپ کو بھیجے گا, اور اگر آپ کو وہ منظور ہے, وہ آپ کو ایکسیپٹ ہے, تو پھر وہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ, رائٹ.
एग्जैक्टली वो टेस्ट जो लिखेंगे वो वापस मार्किंग के लिए यहीं पर आएगा कोलंबिया कॉलेज Okay, okay. मार्क हम ही करेंगे All right, that's good. There's a question on the screen, Saeed Arshid. Is there early child education level 2 or 3 offered by Columbia College? Columbia College just submitted an application to the government. Hopefully, it will not be long. We will be offering the level 2 childcare. Okay. Ali, is there any time period extended or cut short because of the online classes, or is it the same? Online students are working harder than being in class, to be honest. I'm hearing that every day. There's attendance, homework is like sitting in class, essays, presentation, participation. It's exactly it's like you are sitting in the classroom. And the positive I'm hearing is their technology got improved, specifically with the lower level of English speaking people. Their technology nowadays got improved very well. Okay. So basically, अगर 6 महीने का कोर्स क्लास में 6 महीने का था तो वो ऑनलाइन भी 6 महीने का ही है, राइट सनम? बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कोई भी वो नहीं है क्योंकि आपको सर्टेन क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो कंप्लीट करना रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम की। Okay. जैसे ESL है वो भी इसीलिए फंडेड है कि इसके जो आवर्स है, जो 4 मंथ सेमेस्टर है, हमें उसके आवर्स पूरे कंप्लीट करने हैं, वो गवर्नमेंट को खींचना होता है, सारा वो वैसे ही प्रोटोकॉल वैसे ही फॉलो करने हैं। तो ऐसे नहीं है कि हाँ अलबत्ता ये है कि चूंकि ऑनलाइन लर्निंग है तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लॉन्गर टाइम के लिए डिवाइसेस यूज करें या उसके ऊपर बैठे, तो बाद में आपको इंडिविजुअल या ग्रुप वर्क भी दे दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन आवर्स डिफरेंट होते हैं और होम या ग्रुप आवर्स जो है वो डिफरेंट है, बट इट्स सेम लाइक 4 मंथ इसी तरह 9 to 2 अगर टाइमिंग है तो यू शुड बी अवेलेबल बिटवीन 9 to 2 और उसके लिए कोई वो नहीं है। अच्छा, ये अपना सनम, ये जो बाज जो प्रोग्राम्स हैं उनमें प्रैक्टिकम और आई थिंक मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं उनमें प्रैक्टिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोविड के दौरान आप किस तरह हैंडल कर रहे हैं ये प्रैक्टिकम का जो फेज है? वो हम देख रहे हैं कि अगर कोई बाज़ दफा प्रोफेशनल प्रोग्राम नर्सिंग वो जो डेंटल होता है उनका लैब और क्लिनिकल होता है, तो उसके लिए वो कॉलेज वाले खुद ही अरेंज करते हैं और उसमें वो जो कोविड की जितनी रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट सब फॉलो किया जाता है। जो क्योंकि देखिए काम तो हो रहा है, वो तो रुका नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए ये नहीं है। इस तरह हो सकता है कि लगता है कि थोड़ा सा डिले कर दें उसको, लेकिन विद इन दैट टाइम पीरियड जो आपका होता है स्टडी का जो पीरियड होता है उसमें आपको मस्ट कंप्लीट करना है। और ऑफ कोर्स कोविड की वजह से कोई अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकम का बेसिकली फुल फ्लेजेड कोर्स होता है, उसको बिल्कुल टोटली स्किप नहीं करते। ओके, सो जो से ह्यूमन सर्विसेज प्रोफेशनल का प्रैक्टिकम रिक्वायरमेंट थी 300 आवर्स, तो अभी भी वो 300 ही है ड्यूरिंग दिस कोविड, राइट अली? Yes, still 300, still 300, and we all follow the protocol of the COVID, as you may know, and we follow the government policy. So, meaning restrictions today has been changed. So, to place our practicum students, we have to follow with each institute's policy and trying to place most of our students according to the pandemic of the COVID nowadays. Okay. All right. Thank you very much, Ali. Thank you, सनम। और जिस तरह के अली ने भी बताया और सनम ने भी कि कमेंट बॉक्स में ये प्रोग्राम के जो कमेंट्स हैं उसमें वो अपना कोलंबिया कॉलेज का जो जर्नल नंबर है वो भी शेयर करेंगे। और अली और सनम जो दोनों स्टूडेंट एडमिशन एडवाइजर्स हैं, और आई वुड रिपीट दिस कि ये कोलंबिया कॉलेज के एम्प्लॉय हैं
lekin within the rules and regulations, they are wonderful people. They are there to help you guys. और कोई भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो इनको वो जो नंबर कमेंट्स में होगा उससे आप इनको कांटेक्ट करें और just start whatever program you are intend to start और जो भी डेडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जो जहाँ पे ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट फंडिंग हो सकती है या स्टूडेंट लोन हो सकता है उसमें ये भी हेल्प करेंगे और आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम कि हमारे जो लोग आपको इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आए तो उनको आप थोड़ी सी और ज्यादा हेल्प करें और आई विश के we will get over with this restrictions and everything. Thank you very much. Thank you, Kashmir Link. Thank you, Saeed Arshid, for the invitation, and thank you to all your audience for watching. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye. Bye bye.